Hello students, how are you all? I hope you all are good. Now students, today in this session we will discuss your next chapter, and that is your chapter number 9, how many times. What's your chapter name? Chapter name is how many times. So as you can see here, this chapter is related to number of times. What is 2 times of 2? 2 twos are 4. What is 3 times of 4? That is 3 fours are 12. So what we will do today? Today we will discuss how you can use multiplication and division in different problems, and how multiplication is related to number of times and how addition is related to number of times. So let's start from the page number 122. So all of you please open your page number 122 and let's start your next chapter, chapter number 9, how many times. So our first topic is laggy animals. So students, in your surroundings you can see different types of animals, just like cow, goat, ox and cat. Clear? So all animals have legs, and today we will discuss the number of legs of different animals. So here first one is goat. There are 5 goats. How many legs together? Okay, so here you have 1 2 3 4 5 goats. आपके यहाँ पे क्या है? 5 goats हैं, and each goat have 4 legs. हर goat के कितने legs हैं? 4 4 4 4 4 and 4. So if you want to find out the number of legs, total number of legs, how you will do? First, add all the legs. So for first goat it's 4, another got 4 4 4 4. So add 4 5 times. हम 4 को 5 times add करेंगे. Why? Because total number of goats are 5. टोटल आपके 5 goats हैं और हर goat के पास 4 legs हैं. So 4 को हम 5 times add करेंगे. So 4 plus 4 plus 4 plus 4, that is 20. And you can do it like that also. 5 times of 4. आपके हर गॉड के 4 legs हैं और टोटल 5 गॉड्स हैं, तो लेग का 5 टाइम कर दो. ओके, एक गॉड के पास 4 legs हैं, सो 5 गॉड के पास कितने होंगे? 4 का 5 टाइम कर दो. क्लियर? सो 5 टाइम्स ऑफ 4, दैट इज 20. सो फर्स्ट कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं एडिशन. 4 times of 5 times of 4, that is 20. 5 4s are 20, and you can say like that also, 5 times 4 and that is also 20, or 5 4s are 20. Similarly, here you have some spiders, okay, and each spider has 1 2 3 4 5 6 7 8 legs. So just write here how many spiders are here. Total spiders are 1 2 3. So just write here 3. How many spiders? 3. One spider has 8 legs. Clear? Here we have 3 spiders, and each spider have 4 and each spider has 8 legs. So just write here 8. In all spiders, legs are 3 times 8. Clear? एक स्पाइडर की 8 legs हैं, सो 3 स्पाइडर्स के कितने होंगे? 3 times of 8. क्लियर? सो जस्ट राइट हियर 8. नेक्स्ट इज, और यू कैन राइट इट लाइक दैट ऑल्सो, 8 plus 8 plus 8. फर्स्ट स्पाइडर की 8, सेकेंड स्पाइडर की 8, थर्ड स्पाइडर की 8. सो 8 8 8. So 8 plus 8 plus 8, that is equals to 24, and you can write it like that also, 3 into 8. Clear? 3 times of 8 and 3 8 is also 24. So when you fill all the details in your book, you will fill it like that. How many spiders? 3. One spider has 8 legs. In all spiders, legs are 3 times of 8, and you can write it like that also, 8 plus 8 plus 8, that is equals to 24, or 3 8s are 24. Next is, here we have one octopus. Okay, here we have an octopus. Do you know this leggy fellow? There is an octopus. It lives in the sea. It also has 8 legs. Okay, हमारे एक octopus है. एक octopus पे 8 legs होते हैं. Okay, octo means 8.
सो हर ऑक्टोपस में 8 लेग्स होते हैं. सो हाउ मेनी लेग्स ऑल टुगेदर डू 5 ऑक्टोपस हैव? तो आपके 5 ऑक्टोपस के कितने लेग्स होंगे? सो फर्स्ट ऑक्टोपस के 8, सेकेंड के 8, थर्ड के 8, फोर्थ के 8 एंड 5 के 8. सो 8 plus 8 plus 8 plus 8 and plus 8, that is equals to 40, and you can write it like that also, 5 times 8. So 5 8s are 40 and 5 4s are, and 5 multiplied by 8, that is also 5 8s are 40. So if one octopus has 8 legs, so 5 octopus have 40 legs. Clear? Now come to the next page, and that is the page number 123. Find the numbers without counting. Okay, अब यहाँ पे आपको different objects के numbers को count करना है, but without counting. How? Simple. Number of times. Okay, so let's start from the first example. How many flowers in a flower bed? So here you have 1 2 3 4 flower beds, and you have to count the number of flower in each and every bed and total number of flowers. So how you can count total number of flowers without counting? Let's check. How many flowers in a flower bed? So here in one flower bed we have total 1 2 3 4 5 6. Okay, so in a flower bed total number of flowers are 6. It has 4 columns. Each column has 6 flowers. Okay, 1 2 3 4. 1 2 3 4. Total you have 4 columns, and in each column total numbers of flowers are 6. आपके पास टोटल यहाँ पे 4 columns हैं और हर column में 6 flowers हैं. Okay, so all together the flower bed has 4 times 6 flower. तो अगर एक बेड में 6 है तो 4 बेड्स में टोटल कितने होंगे? 6 times of 4 या 4 times of 6. आप जितने आपके फ्लावर हैं उनको 4 टाइम्स कर दीजिए. क्लियर? सो फर्स्ट मेथड, जस्ट ऐड 6 + 6 + 6 + 6 6 4 टाइम्स ऐड कीजिए, दैट इज 24, और 6 4s दैट इज ऑल्सो 24. क्लियर? नाउ अनदर एग्जाम्पल इज, लेट्स ट्राई अनदर वे. ओके, नाउ जस्ट डिवाइड योर बेड्स लाइक दैट. ओके, इनको आप ऐसे डिवाइड कर दीजिए. नाउ इन ईच बेड टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स आर 4. आपके हर बेड में 4 फ्लावर्स हैं, एंड टोटल आपके पास कितने बेड्स हैं? 1 2 3 4 5 6. टोटल आपके पास 6 बेड्स हैं. पहली कंडीशन में आपके हर बेड में 6 फ्लावर्स थे और टोटल आपके पास 4 बेड्स थे. क्लियर? बट नाउ हियर यू हैव 4 फ्लावर्स इन ईच बेड. ओके, एंड टोटल बेड्स आर 6. अगेन 4 times of 6, that is 24. So again you have 24 flowers. So it's totally up to you. You will start the counting vertically or horizontally. आप vertically count करते हैं या horizontally count करते हैं, या आप 3 times 4 कहते हैं या 4 times 3 कहते हैं, both are same. times 4 कहते हैं या 4 times 6 कहते हैं, both are same, because 6 4s are also 24 and 4 6 also 24. आप 4 6 करें या 6 4 करें, दोनों सेम है. Now here you have one question. In the same way, how many bottles are this? अब आपको ऐसे ही काउंट करना और चेक करना है कि यहाँ पे कितनी बोटल्स हैं. सो फर्स्ट जस्ट डिसाइड विच इज़ योर बैट. ओके, जैसे आपके बैट थे, आप डिसाइड कीजिए आप कैसे काउंट करना चाहते हैं. सो हेयर आई एम गोइंग टू डिवाइड इट लाइक दैट. फर्स्ट बैट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ओके, और यू कैन से दैट फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम. सो टोटल आपके पास यहाँ पे 5 कॉलम्स हैं और 5 सेक्शंस हैं, और हर सेक्शन में कितनी बॉटल है? 1 2 3 4. क्लियर? सो आप 5 times 4 कर दीजिए. क्लियर? अब टोटल आपके पास क्या है? एक सेक्शन पे 4 बॉटल्स हैं और टोटल 5 सेक्शन है. सो 5 times 4, और यू कैन से दैट 4 times 5 ऑल्सो. Clear? So 4 5s are 20. Okay, now how many eggs? So here you have 1 2 3 4 5. So here you have total 1 2 3 4 5 columns. So just write here 5 times, but kiska 5 time? Let's check. In each column you have 1 2 3 4 5 6 eggs. So 5 times of 6. So 5 6 are 30. So here you have total 30 eggs. And if you divide your columns like that, 1 2 3 4 5 6, so this time you have 6 columns, and in each column you have 1 2 3 4 5
5 eggs. So again 5 6 are 30. Okay, so it's totally up to you. You will divide it vertically or horizontally. Now come to the next page, and that is your page number 124, and here you have one practice time, and this practice time is totally based on your page number 122 and 123. Now let's start from the first one. Rewrite using the plus sign. So again you have to write these multiplication statement in additional form. Okay, so now you have to convert the multiplication into the additional form. How? Let's check. So here you have one example also. 5 2s are, so 5 2s are 10, and you can say that 2 times of 5, and 2 times of 5 means 5 plus 5. 5 को आप 2 times add कर दीजिए. Okay, now here you have 4 multiplied by 18, it means 4 times 18. So now you have to add 18 4 times. Clear? So that is your expanded form. Next you have 3 multiplied by 20, and you can say that 3 times of 20. 20 को 3 times लिखना है. So just write here 20, 20 and 20. Here is your answer. Next is 8 multiplied by 9, so it's 8 times of 9. Okay, so just write 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 and 9 8 times. Okay, so आप 8 को 9 times multiply करें या 8 को 9 times add करें, both are same. Okay, 9 को आप 8 times multiply करें, 9 8s करें, या 9 को 8 times add करें, both are same. So here is your answer. Just pause the video and write it in your book. After this video I will provide you one worksheet also, which are based on your practice time. Okay, and that worksheet you have to do it in your notebook. Now come to the next one. Tell how many times. Okay, now you have to tell us how many times. Now in this question you have to find out that how many times. In first question you have to expand it in additional form. Now here you have to find out the how many times. So here you have total 1 2 3 4 5 6 6 9. So here is 6 9s and that is 54. Now again another example is 1 2 3 4 5 5 times 4. So that is 5 4s are 20. Now here you have 1 2 3 3 8, so that is 3 times 8 and that is 8 3s are 24. Next one is 1 2 3 4 5 5 times 3. So just write here 5 into 3 and that is equals to 15. Next is 30 plus 30 plus 30. So it means 3 times 30. यहाँ पे आपका 33 times है and 3 3s are 9 and 0 का 0, and you can say that 33s are, that is 90. Clear? So आप 30 को 30 से फिर then 30 से it means आप 30 को 3 times add करें या 33s करें, both are same. Okay, 33s are 90, 30 plus 30 plus 30, that is also 90. Next is 7 7 7 7. So here you have total 1 2 3 4 5 6 6 7s. Okay, so 6 times of 7, that is 6 7s are, and 6 7s is 42. Next is 4 times 12. So 4 into 12 and 12 4s are, that is 48. Here you have 3 times 6. So 3 6s are, that is 18. Next is 4 times 10. So 4 times 10 and 10 4s are 40. Okay. Next is 5 times 2. So 5 times 2 and that is 5 2s are 10. And the last one is 1 2 3 4 5 6 7. 7 times 6. So 7 times 6 and 7 6s are 42. Okay. So just pause your video and write the answer in your book. Now come to the next page, and that is your page number 125, and here you have some word problems. You have to read each and every word problem carefully, then work on it. Okay, so your first word problem is Ramu bought 4 packets of biscuit. Okay, so Ramu जो है वो बिस्किट के 4 पैकेट्स खरीदते हैं. Each packet has 4 biscuit and in each packet
देयर इज 4 बिस्किट्स. ओके, हर पैकेट में कितने बिस्किट्स हैं? 4. हाउ मेनी बिस्किट्स डिड रामू बाय? ओके, सो ही हैज़ टोटल 4 बिस्किट total 4 packet of biscuits, but now you have to find out the total number of biscuits. Okay, आपको total number of biscuits find out करने हैं. Okay, so total packets 4 and in each packets number of biscuits are 4. So 4 times 4. Clear? But you have to write here 4 times 4. Okay, 4 पैकेट्स हैं, हर पैकेट में 4 बिस्किट्स हैं. सो 4 times 4 दैट इज 4 4 ज़ा 16. सो योर फाइनल आंसर इज 16 बिस्किट्स. क्लियर? सो पॉज योर वीडियो एंड राइट द आंसर्स इन योर. Now next first problem is there are 12 desks in a classroom. एक classroom में total 12 desks हैं. Each desk has 4 legs और हर desk के कितने legs हैं? 1 2 3 4. Now what is the total number of legs of the desks? तो अब desks के total कितने legs हैं? So एक desk के कितने legs हैं? 4. So 12 desks के कितने होंगे? 4 times 12. Clear? So that is 4 multiply 12 and 4 12s are या फिर 12 4s are that is 48. Clear? So total number of legs that is 48. Okay, so total number of legs are 48. Now next is Sahiba brought home 3 bunches of flowers. साहिबा 3 bunches लेती हैं flowers के. Each bunch has 4 flowers और हर bunch में कितने flowers हैं? 4 flowers हैं. How many flowers were there? तो अब वहाँ पे कितने flowers थे? So total number of bunches are 3 and in each bunch total number of flowers are 4. So total number of flowers in 3 bunches that is 4 times 3. Okay, so that is 4 3s are 12. So total number of flowers are 12. Next and the last word problem is वन रेल कोच हैज़ 8 व्हील्स. आपका जो एक रेल कोच है उसमें टोटल 8 व्हील्स हैं. हाउ मैनी व्हील्स आर इन ऑल? 6 कोचेस. तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 कोचेस में टोटल कितने व्हील्स होंगे? क्लियर? सो एक कोच में कितने व्हील्स हैं? 8. टोटल कितने कोचेस हैं? 6. सो टोटल कितने व्हील्स होंगे? 8 times 6. ओके, 8 times 6. So that is 8 multiplied by 6 and 8 6 are 48. So total 48 wheels. Total number of wheels are 48. Now students, one by one just pause your video and write the answers in your book. Okay, and for previous solution go backward and again just pause your video and write the answers in your book. Now come to the next page and that is your page number 126 and the topic is how many times 2. Okay, so basically it's a table of 2. ये 2 का टेबल है और 2 का टेबल कैसे वर्क करता है हम इसको यहाँ पे समझेंगे. So here you have 2. Okay, now you have 2 sets of 2. So 2 2s are 4. 3 sets of 2. So 2 2 2. So 2 3s are 6. Now 4 sets of 2. So 2 plus 2 4. 4 plus 2 6 and 6 plus 2 8 and 2 4s are again it's 8. Now with the help of this distribution you have to fill these boxes. Okay, so let's start how you can do that. First one is 1 time 2. Okay, यहाँ पे 2 का एक ही टाइम रिपीट हो रहा है 2 का पैटर्न. So 1 time 2 that is 2. So you can say that 1 2s are 2. Next is here you have 2 times 2. So 2 times 2 is 2 2s are 4. 2 2s are 4. Another one is 3 times of 2. So 3 times of 2 is 6. So 3 2s are 6. Next you have 4 times of 2. So 4 2s are 8. 4 times of 2 is 8. So 4 2s are 8. 5 times of 2. So that is 5 2s are 10. So 5 2s are 10. 6 times of 2 is 12. 6 2s are 12. Now 7. 6 के बाद 7 आता है ना. So 7 times of 2 is 14. 7 2s are 14. Okay. Next is 8 times 2 is 16. 8 2s are 16. 9 times 2 is 18. 9 2s are 18. 10 times 2 is 20 and 10 2s are 20.
Okay, that is your answer. Okay, as you can see here in your last row, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So you have 10 times of 2. अब हर सेट में 2 रिपीट हो रहे हैं, तो 10 times of 2 and total there is 20 birds. Okay, so 10 2s are 20. Now next is page number 127 and the topic is jump with me. Taru frog jumps 3 steps each time. जो आपका frog है वो हर टाइम 3 steps jump करते हैं. Which number will Taru touch? अब जो तारू हैं वो किन किन नंबर्स को टच करेंगे? सो यहाँ पे जंप हो रही है 3 की, हाँ जंप यहाँ पे 3 की. सो यहाँ पर आपकी 3 टाइम्स में जंप हो रही है. इट मीन्स यहाँ पर आपका 3 का टेबल रिपीट हो गई. कैसे? लेट्स चेक. नाउ लेट्स सपोज तारू आपके फ्रॉग हैं, उनकी इनिशियल पोजीशन जो थी वो थी 0. अब वो 3 पे जंप 3 टाइम्स, अब वो 3 स्टेप्स जंप करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? 3 पे. नाउ अगेन 3 स्टेप्स जंप करेंगे तो 6 पे पहुँचेंगे. 1 2 3 स्टेप्स छोड़ के. नाउ अगेन 3 स्टेप्स जंप करेंगे, सो 1 2 3 तो कहाँ पहुँचेंगे? 9 पे. सो एज यू कैन सी हियर इट्स रिपीटिंग द टेबल ऑफ 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 18, 21 and so on. So now you have to fill the boxes which are here. In first jump he will reach third step. In third step. Now in second jump 3 2s are 6, third jump 3 3s are 9, fourth jump 3 4s are 12, fifth jump 3 5s are 15. In sixth jump 3 6s are 18. In seventh jump 3 7s are 21. Eighth jump 3 8s are 24. Ninth jump 3 9s are 27. 10th jump 3 10s are 30. 11th jump 33. 12th jump 3 12s are or 12 3s are 36. 13th jump 13 3s are 39. 14th jump 14 3s are that is 42. 15th jump that is 15 3s are 45. ओके, सो 15th जंप के बाद उनकी पोजीशन होगी 45 पोजीशन. और अब इस पैटर्न से आपको क्या समझ में आ रहा है कि वो हर जंप के बाद 3 स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं. इट मीन्स यहाँ पे टेबल फॉलो हो रहा है 3 का. ओके, सो फाइनल पोजीशन जो होगी उनकी 15th जंप के बाद ये होगी आपकी 45 बिकॉज 15 3s are that is 45. Now come to the next page and that is your page number 128. शो जम्प्स विद 4 स्टेप्स. सो जैसे कि आपके प्रीवियस पेज में वो पेज नंबर 126 में आपके फ्रॉग 3 स्टेप्स में जंप कर रहे थे, इसमें हम करेंगे 4 स्टेप्स में जंप. सो लेट्स चेक हाउ. सपोज द इनिशियल पोजीशन इज 0. सो नाउ 4 जंप 1 2 3 4 5. Now suppose the initial position is 0. So after 4th step the position is 4. Now again 4th step 1 2 3 4 position is 8. 1 2 3 4 now it's 12. 1 2 3 4 now it's 16. 1 2 3 4 now it's 20. So here we are following the table of 4. Clear? सो आप 4 को 4 4 4 सो आप 4 4 4 करके उनको ऐड करें या फिर 4 के टेबल्स के अकॉर्डिंग उनको करें. बोथ आर सेम. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20 and so on. So students that is your homework. ओके, सिमिलरली जैसे कि हमने पेज नंबर 127 में 3 के टेबल्स के साथ किया है, आप सिमिलरली उसे यहाँ पे करेंगे और इसे अपनी बुक में करेंगे. इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन यूज़ योर कमेंट सेक्शन एंड अगेन आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 129. ट्राई जम्प्स विथ 7 स्टेप्स. सिमिलरली जैसे हमने 3 स्टेप्स में जंप करी है, 4 स्टेप्स में जंप करी है, अब हम 7 स्टेप्स में जंप करेंगे. So if your position is 0, so your first jump is at 7. आप 7 पे जंप करेंगे, then 14, then 21. So यहाँ पे हम टेबल फॉलो करेंगे 7 का. So 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21. फोर्थ स्टेप में आपकी पोजीशन हो जाएगी 7 4s are 28. फिफ्थ स्टेप में आपकी पोजीशन होगी 35, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 9s are 63, 7 10s are 70,
7 11s are 77, 12 7s are or 7 12s are both are same, that is 84, 13 7s are 91, 14 7s are 98 and 15 7s are 105. Clear? So students, pause your video and write the answers in your book. That is your page number 129. And if you have any problem, then use your comment section. Okay? आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं. Now come to the next page and that is your page number 130. Stick play. Now come to the next page and that is your page number 130. Stick play. मितू हैड सम स्टिक्स, शी अरेंज देम लाइक दिस. सो मितू के पास कुछ स्टिक्स है, वो उनको अरेंज कर रही है. सो 1 टाइम 5 इट मीन्स 5, 2 टाइम्स 5 इट मीन्स 10, 3 टाइम्स 5 15, 4 टाइम्स 5 20. Then she count how many times the sticks were crossing each other. She found that 4 times 5. Okay. So जब उन्होंने ये पैटर्न बनाया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये एक दूसरे को कितनी पॉइंट्स पे क्रॉस कर रही हैं. ओके. सो 1 2 3 4 5. हर रो में वो 5 टाइम उसको क्रॉस कर रही हैं. टोटल आपके पास 4 रोज हैं. इट मीन्स 4 टाइम्स 5. ओके. सो उनकी ऑब्जर्वेशन के बाद उन्हें क्या पता चलता है कि उनकी स्टिक्स जो हैं वो 4 टाइम्स 5 यानी कि 4 5 20 टाइम्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं. क्लियर? अब वो इसको दूसरे पैटर्न से अरेंज करती है. लेट्स ट्राई मेकिंग अ 2 टाइम्स टेबल. सो एज यू कैन सी हियर यू हैव 2 क्रॉसिंग, again another 2 crossings, 2 2 2 2. Okay, so in first crossing you have total 2 dots, so 2 ones are 2. Here you have again 2 dots, so 2 plus 2 that is 4. In third crossing you have 2 more dots, so here you have total 6 dots. In fourth crossing जब आपके 2 dots और ऐड हो जाते हैं, so total आपके हो जाते हैं 4 2s are 8. फिफ्थ क्रॉसिंग में 1 2 3 4 5. फिफ्थ क्रॉसिंग में आपके 2 मोर ऐड हो जाते हैं तो ये हो जाता है आपका 10. सिक्स क्रॉसिंग में 2 और ऐड हो जाते हैं, सो 6 में 6 2s are 12. सेवन क्रॉसिंग में 2 और ऐड हो जाते हैं, सो 12 में 2 और ऐड करके ये हो जाएगा आपका 14 एंड 7 2s are also 14. अब 8th स्टेप में 2 और ऐड करेंगे, सो आपका हो जाएगा 16. फिर 2 ऐड करेंगे 18 एंड देन 2 ऐड करेंगे 20. Okay, so what you have to do here, you have to fill the answers. 4 2s are 8, 5 2s are 10, 12, 14, 16, 18 and 20. हर स्टेप्स में आपके 2 2 डॉट इंक्रीज हो रहे हैं और ये आपका फॉर्म हो रहा है टेबल ऑफ 2. Now come to the next page and that is a page number 131 and your topic is now draw sticks to make the multiplication table of 6. अब आपको ऐसे ही इस स्टिक्स के पैटर्न को फॉलो करके टेबल बनाना है 6 का. सो हेयर यू हैव शॉर्टेज ऑफ स्पेस, सो यहाँ पे हम स्टिक्स को डिफरेंट तरीके से अलाइन करेंगे. सो 6 का अगर हमें टेबल बनाना है, सो हम यहाँ पे फर्स्ट 3 4 5 6 स्टिक्स को अरेंज करेंगे एंड 10 टाइम्स तक के लिए करना है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Clear? Now let's check the number of crossings. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 and so on. So आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और इसको अपनी बुक में करेंगे. Clear? And when you do it in your book, just click the picture and send it to me. Okay, so that is your homework. Clear? That is the table of 6. First step में 6, then 12, then 18 and so on. So pause the video and do it in your book. And be careful, you have to do it with the help of the scale and pencil. Okay? You can use your pencil colors also. Now come to the next question. Shopping with tables. अब आपको क्या करनी है? शॉपिंग करनी है और पेमेंट होगी टेबल की हेल्प से. Let's check how you can do that. How much do these things cost? Here you have some candies and the cost of each candy is 2 rupees. Okay, so cost of 4 top candies is 4 2s are that is 8. Okay, so your answer is 8 rupees. Now here you have some pencil box and the cost of each box is 10. So what is the cost of 3 pencil box? 10 3s are 30. What is the cost of 10 pencil box? 10 10s are 100.
ओके, इसको दोबारा से समझ लेते हैं। अगर एक कैंडी 2 रुपीज़ की है सो 4 कैंडीज़ कितने की होगी? 4 into 2, 4 times of 2, so that is 8. So answer is 8 rupees. If the cost of one pencil box is 10 rupees, so what is the cost of 3 pencil box? 3 times of 10, so that is 3 tens are, your answer is 30 rupees. And what is the cost of 10 pencil box? 10 times of 10. अगर आप 10 boxes लेते हैं 10 रुपीज़ वाले, so you have to pay 100 rupees. So your answer is 100. Next, you have 9 balloons and the cost of each balloon is 5 rupees. So what is the cost of 9 balloons? So that is 9 times of 5. So 5 nines are, or 9 fives are, that is 45 rupees. So the cost of 9 balloons is 45 rupees. Next is 5 toy cost. So the cost of each toy is 4. So what is the cost of 5 toys? 4 times of 5. So that is 5 4s are 20. So your answer is 20 rupees. Next is 7 face masks. So one mask is 3 rupees. So what is the cost of 7 face masks? So that is 7 times of 3. So 7 3s are 21. So your answer is 21 rupees. Now students, you have practice time and you have to do it in your book only. Okay, after that I will provide you one worksheet which are based on your chapter. Then that worksheet you have to do it in your notebook. So now let's start from the first question, and your question number 1 is complete the following. So here you have simple multiplication questions, and I think you all are able to do that. Okay, so do it in your book by yourself only. So 7 4s are, so your first one is 2 7s are, that is 14, 4 9s are 36, 5 8s are 40, 10 6s are 60, 5 9s are 45 and so on. So आप ये खुद करेंगे, किसी कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी these questions are very easy, okay, and you all are able to do that. But still if you have any confusion, so you can use your comment section also. Now next is part B, look at the patterns and complete them. So आपको patterns को follow करना है और इनको complete करना है. So here you have first 3, then 6, then 9. So as you can see here, it's a table of 3. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9. So just continue it with the table of 3. 3 4s are 12, 15 and 18. Okay. Next is 2, 4 and 6. Again it's a table of 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10 and 2 6s are 12. Now 10, 20 and 30 is a table of 10. So 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 10 5s are 50 and 10 6s are 60. Next you have table of 4. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20 and 4 6s are 24. Next is the table of 5. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25 and 5 6s are 30. Next 30, 60 and 90. So here it's a table of 30. 31s are 30, 32s are 60, 33s are 90, 34s are 120, then 150 and the 180. Clear? आपका हर टाइम 30 इंक्रीज हो रहा है. Now come to the next one, and it's your part C, complete the multiplication tree. So here you have an example also, that is 10. Okay, so 10 आपका किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ सकता है? फर्स्ट एग्जाम्पल इज 2 5s are 10, 5 2s are 10 and 10 1s are 10 and 1 10s are also 10. So ऐसे ही आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशंस को फाइंड आउट करके इसको कंप्लीट करना है. So 12, 2 6s are 12, 6 2s are 12, 3 4s are 12 and 4 3s are 12, 12 1s are also 12. Okay, next is 18. So 2 9s are 18, similarly 9 2s are 18. Okay, 6 3s are 18 and 3 6s are 18. Okay, next is 35. 5 7s are 35, 7 5s are 35 and 35 1s are 35. Next is 24. So 2 12s are 24, 12 2s are 24, 4 6s are 24, 8 3s are 24 and 3 8s are 24. Next is 36.
सो 36 के तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जस्ट लाइक 24 के भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज 2 18 ज़ा 6 36, 18 2 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, ओके, एंड 12 3 ज़ा 36, 3 12 ज़ा 36. Clear? So the last one is 45. So 5 9 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45, 5 3 15 ज़ा 45 and 15 3 ज़ा 45. Okay. So that is your page number 135. One by one, just pause your video and write all the answers in your book. Now you have question number D, and again in question number D you have some word problems. Okay, so let's start from the first one, and you have one example also here. The Almirah has 4 shelves. आपके पास एक अलमीरा है, उसमें टोटल 4 शेल्फ्स हैं. क्लियर? देयर आर 5 बुक्स इन ईच शेल्फ, और हर शेल्फ में, हर खाने में आपके क्या है, टोटल 5 बुक्स हैं. हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन अलमीरा? तो अलमीरा में टोटल कितनी बुक्स हैं, आपको ये फाइंड आउट करना है. ओके, सो एज यू कैन सी हियर 4 shelves, and in each shelf you have 5 books, so 4 times of 5, that is 20. 5 4s are 20. Now next question is a shirt has 5 buttons. एक शर्ट में 5 buttons हैं और टोटल आपके पास 3 shirts हैं, so टोटल कितने buttons होंगे? So here is the solution. A shirt has buttons equals to 5. एक शर्ट में 5 buttons हैं. Number of shirt equals to 3. टोटल आपके पास 3 shirts हैं. So total buttons are 3 times of 5. 5 3s are 15. So total number of buttons are 15. Now next question is there are 4 fans. आपके पास टोटल 4 fans हैं. Each fan has 3 blades, और हर fan में 3 blades हैं. So total आपकी कितनी blades होंगी? So here is your solution. Number of fans equals to 4. टोटल आपके पास 4 fans हैं. Blades in each fan is 3. हर fan में 3 blades हैं, तो total blades 4 times of 3, that is 4 3s are 12. So total number of blades are 12. Now next question is a box containing 6 apples. एक box में total 6 apples हैं. How many apples in all will 7 boxes have? So total आपके 7 boxes में कितने apples होंगे? Here is your solution. Apples in each box. एक box में कितने apples हैं? 6. Total number of boxes 7. Total आपके कितने boxes हैं? 7. So total apples 6 times of 7. 7 का 6 टाइम कर दीजिए, तो 7 6 are 42. So total आपके होंगे 42 apples. आपके 7 boxes में total 42 apples होंगे. Now next is how many corners would 4 triangles have? आपके 4 triangles में कितने corners होंगे? So students, आपके एक triangle में total होते हैं 1 2 3 corners. Okay, so 4 triangles में कितने होंगे? Let's check. Corners in a triangle is 3. आपके एक ट्रायंगल में होते हैं 3 कॉर्नर्स. सो टोटल ट्रायंगल्स आपके 4 हैं, तो 4 ट्रायंगल्स में कितने कॉर्नर होंगे? 3 times 4. 4 का 3 टाइम्स कर दीजिए. क्लियर? सो 3 4s are 12. सो आपके टोटल होंगे 12 कॉर्नर्स. सो स्टूडेंट्स, पॉज योर वीडियो एंड राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक. यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक. ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे. Now come to the next and the last question of my practice time, and that is some multiplication facts. So here you have some questions which are based on multiplication facts. So let's see. The first one is 8 3s are. So 8 3s are 24. 5 35. So 5 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे 35 हो जाए? So that is 5 7s are. 5 7s आपका 35 होता है. So here is your answer 7. 5 7s are 35. Now here you have 3 and you have to multiply with any number. So 3 4s are 12. हम यहाँ पे 4 से कर लेते हैं. 3 4s are 12. Now you have here 6 and your answer is 36. So 6 में किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 36 हो जाए? 6 6 6 are 36. नेक्स्ट यू हैव 42 और आपको कॉम्बिनेशन ढूंढना है कि किसकी टेबल में आपका 42 आ सकता है, किसको कितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें कि 42 आए. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट 6 6 7s are 42 and you can write 7 6s also. Now you have here 10 only, so put any digit here. I am going to write here 4. 10 4s are 40. Okay. Next is 5 multiply by something and you will get 40. So 5 8s are 40 होता है. So just write here 8.
Now here you have 9 and your answer is 36. So 4 9s होता है 36. So 4 9s are 36. Put here 4. Now next is 54 and 54 combination किन किन numbers का बन सकता है? 9 6 are 54, 6 9s are 54 also. आप आगे 6 और पीछे 9 भी लिख सकते हैं. Next is 7 and your answer is 28. So आपका 7 4s या 4 7s होता है 28. So your answer is 4. Okay. So your answers are 24. Okay, 7, 6 and 5 8s are okay, and 4. Then here also 4 and 54 6 9s are 54. और यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं. Clear? So student, that is your page number 134. Rest of the pages we will discuss in the next part of this video. Okay, till then just watch this video at least 2 times. For any confusion, use your comment section. Complete your book work and do your word problems in your notebook. These word problems you have to do it in your notebook with the help of this video. Please do it in your notebook. And for any confusion, for any query, use your comment section. I hope this video is helpful to all of you. If you like it, please like, subscribe and share. Thanks for watching it. Have a nice day. Take care. Bye-bye.